Hello everyone, this is Dr. Debashish Misra. My dear students, SSC JE RRB JE रो गोटे previous year question हम solve करबा. Concept कौन पिला माने KCL रो कौन पिला माने Kirchhoff's current law रो concept ऊपर आज मु पढेबी. प्रथमे पिला माने को Kirchhoff's current law कौन? Number of incoming current is equals to the number of outgoing current. कौन पिला माने number of incoming current is equals to number of outgoing current. Otherwise, number of currents meeting at a point is equals to 0. जहाँ भी कहले चलिबो. क्वेश्चन टी कोन अछि? If the voltage V across 10 ohm resistance is 10 volt, this is 10 ohm resistor. If the voltage V across 10 ohm resistance is 10 volt, what is the voltage E of the voltage source in the circuit given below? कौन पता चला? If the voltage V across 10 ohm resistance is 10 volt, it is the 10 volt, what is the voltage E? ये voltage केते से पचाउची in the circuit. ठीक अछि पिला माने मु कहि KCL पडिबो. काहे कि KCL पडिबो देखो एटा गोटे अछि पॉइंट, एटी धर I करंट, एटी 5 एम्पियर करंट आसुची एमती आसुची. सो एटा हला केते 5 एम्पियर. ऑब्वियसली एटा एमती हो. दीटा इनकमिंग गोटे आउटगोइंग. ताले कोन हो पिला माने KCL मु कोन कहली? नंबर ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट. केतेटा इनकमिंग करंट अछि पिला माने? इनकमिंग कहा को एई पॉइंट को एटा सपोज में VA दे दबो. वोल्टेज VA हैला. I इनकमिंग 5A इनकमिंग. ताले पिला माने कोन लिख परिबा? I plus 5 ampere is equals to, this is outgoing. If you consider this point outgoing, बुझी परछु पिला माने एटा हम सपोज लिखि दबा. केते हो पिला माने मते को एठी पिला माने एटा हेला 10 वोल्ट. इफ द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट, तो एठी हेला 10 वोल्ट. हमें KCL बर्तन अप्लाई करियो. KCL अप्लाई करले कोन हो पिला माने मते को किए इनकमिंग अछि, I इनकमिंग अछि, बुझी होछि. 5 एम्पियर इनकमिंग अछि, I1 आउटगोइंग अछि. सो I हेला इनकमिंग प्लस 5 एम्पियर वाला इनकम इज इक्वल्स टू आउटगोइंग की ना I1. बुझी हला. I टा केमिति पाइबे? फार्मूला I रो कोन पिला मन? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. एटा गोटे वोल्टेज अछि कि दीटा वोल्टेज अछि. बुझी होछि पिला मन? एटा गोटे वोल्टेज, एटा 10 वोल्ट गोटे वोल्टेज. हमें कोन लिखबे ना E minus 10 divided by 5 वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. तो मैंने कहि पिरियो सर काहे कि 10 नु ई कलनी? कारण देखो करंट एमिति फ्लो होछि. करंट जो फ्लो होछि सेटा बड़ बड़ रु सानो को फ्लो होय. सो E minus 10 by 5 plus 5 लिखि दो. I1 टा केते हो मते को 10 by 10 1 ampere. बुझिया? It implies that LCM 5 ने गलो E minus 10 plus 25 is equals to 1. It implies that कौन हे वाला पिला माने E plus 15 by 5 is equals to 1. E plus 15 is equals to 5. E is equals to 5 minus 15 is equals to minus 10 volt. बुझी पला ना पिला माने? ऑप्शन B is the correct answer. This is the concept of KCL, Kirchhoff's current law. बुझे लन? Incoming, I is incoming, 5 ampere is incoming. This is outgoing. This is the point. One point रे कौन है पिला माने? ये incoming, ये outgoing. So this current plus this current is equal to this current. Answer is minus 10 volt. बुझे ला? Thank you.